Hello everyone. So in this topic, we will study first of all about the classification of bacteria as gram positive, gram negative. Then we will study their structure, and then I'll give you a brief introduction of the Staphylococcus, about the anaerobes, and about the gram negative bacteria. Okay, so it will be a very hodgepodge lecture, but I hope it will be helpful to you. So first of all, what we're going to study is about how to stain the bacteria into gram positive and gram negative. Right. So first of all, smear preparation is required. Okay, smear preparation is required. यहाँ पे कट गया. Smear preparation. Okay, then you stain it with crystal violet, keep it for 1 minute, then apply the mordant, which is iodine solution, keep it again for 1 minute. You will form crystal violet and iodine complex. Then give it a wash with alcohol or either alcohol acetone and wash it for 10 to 20 seconds. If it is a gram negative bacteria, it will get washed. The crystal violet will not form a complex with iodine, and it will form complex, but this complex will get washed off because of the thin layer of the peptidoglycan in gram negative bacteria. Then after this, you counter stain with safranin. Again, keep it for 1 minute. Gram negative bacteria will take this stain and will appear pink, whereas gram positive bacteria will keep this stain crystal violet and appear your violet color. Now let's take a look of a gram positive bacteria. So you see, first of all, in a gram negative, first ये gram negative bacteria है, ठीक है. In this gram negative bacteria, yeah, inside you have cell membrane. Outside the cell membrane, you have a very thin peptidoglycan layer, which is only 1 to 3 mm in thickness. Comparatively, a gram positive bacteria will have a 20 to 80 nanometer, millimeter लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी, ये होगा आपका नैनोमीटर, nm. Okay, so only 1 to 3 nanometer in thickness, but in a gram positive it will be 20 to 80 nanometer in thickness. Outside the peptidoglycan layer, you have a periplasmic space, also called simply periplasm, and outside the periplasm you have an outer membrane which is of lipopolysaccharide, and this lipopolysaccharide is made of these three structures. You have lipid A as the lipopolysaccharide, and polysaccharide में आपके पास है O polysaccharide and core polysaccharide. So lipid is this part, lipid A, this is lipid A, then this is the core polysaccharide part, and then outer side you have O polysaccharide part. Next we see the structure of a gram positive bacteria. So in a gram positive bacteria, the cell wall contains the glycan chain. This is the glycan chain. Along with the glycan chain, peptidoglycan, not glycan chain, peptidoglycan layer, which is a very thick layer. It's approx 20 to 80 nanometer thickness, and then you have a teichoic acid and lipoteichoic acid in the cell wall. So teichoic acid, lipoteichoic acid is present only in gram positive, and peptidoglycan layer. This peptidoglycan, the basic structure is a NAG-NAM thing. This NAG-NAM is a glycan chain. Okay, this glycan chain, they link to each other. NAG is connected to NAG-NAM, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid, N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid, and then interlinked by a beta 1,4 glycosidic linkage. See, N-acetyl glucosamine connected to N-acetyl muramic acid consecutively, and with the N-acetyl muramic acid you have a 3 to 5 amino acid का लंबा एक short peptide chain. This short peptide chain is responsible for the cross linkage. So हमने staining पढ़ लिया, structure देख लिया. Now let's classify the gram positive bacteria. See, gram positive bacteria are first of all 3 types: bacilli, cocci, and branching filaments. Cocci we know there are only 2, Staphylococcus and Streptococcus. देख के पता चल रहा है Staphylococcus एक bunch of grape है, Streptococcus linear है, but फिर भी कैटालाइज पॉजिटिव होता है Staphylococcus. Streptococcus is catalase negative. Catalase टेस्ट कैसा होता है? You add H2O2, okay, and bubbles आने लगेंगे. So catalase positive.
Staphylococcus. Catalase negative Streptococcus. Then coming back, तो अब फर्दर स्टेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस को हम लोग अलग करेंगे. स्ट्रेप्टोकोकस के लिए विल यूज़ दी ब्लड अगर विच विल गिव यू अल्फा बीटा एंड गामा हिमोलिसिस. अल्फा यानी कि पार्शियल, बीटा यानी कि कंप्लीट, गामा यानी कि नो हिमोलिसिस. इफ इट इज़ अ completely hemolytic bacteria, then you check whether it is a Streptococcus pyogenes or a Streptococcus agalactiae. If it is a Streptococcus pyogenes, then bacitracin sensitivity होगा, but Streptococcus agalactiae is not sensitive to bacitracin. So complete hemolysis में there are only two bacteria, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae. Bacitracin sensitivity with pyogenes, absent with agalactiae. Then if it is a partial hemolysis, that means the colonies will appear green, the blood agar colonies will appear green. Here they will be pale because of complete hemolysis. Green colony, alpha hemolysis, partial hemolysis. Now there are two groups, pneumonia and viridans. Streptococcus pneumonia and viridans. Pneumonia is encapsulated, viridans is unencapsulated. Encapsulated, unencapsulated. Pneumonia, viridans. So if it is a capsule containing bacteria, it will be sensitive to optochin. So remember optochin के लिए कौन sensitive होगा? Capsule is the target for optochin. So you can remember by this. Obviously optochin will be able to kill the pneumonia and not viridans. Okay. So complete hemolysis, bacitracin sensitivity to differentiate pyogenes from agalactiae, optocin sensitivity in alpha hemolysis to differentiate pneumonia from viridans. And lastly, when it is a non-hemolytic bacteria, then you differentiate from enterococcus from non-enterococcus. See, enterococci are now a separate group together. They are not considered a streptococcus anymore. But here, for the classification sake, we have kept it. So actually streptococcus का नहीं है, ये अलग ही हो जाता है enterococcus. ठीक है, ये पहले ग्रुप डी था लेकिन अभी अलग हो चुका है. एंटेरोकोकस में एंटेरोकोकस में आते हैं दो लोग, एंटेरोकोकस फीकालिस, एंटेरोकोकस फीसियम. ओके, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट इट? सी, अगर 6.5% NaCl को टॉलरेट कर पा रहा है देन इट इज़ अ एंटेरोकोकस. अगर नहीं टॉलरेट कर पा रहा है देन इट इज़ अ नॉन एंटेरोकोकस. एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, फीकालिस, फीसियम, they are enterococci. Non-enterococci, streptococcus bovis. And if they are sensitive, if they are able to grow in 6.5% NaCl, it is enterococci. Now staphylococcus में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कैटलेस पॉजिटिव से हमें पता चल गया स्टैफिलोकोकस है, उसको अलग करेंगे कोएगुलेस से. इफ इट इज अ कोएगुलेस पॉजिटिव थिंग देन इट इज स्टैफिलोकोकस ऑरियस. इफ इट इज कोएगुलेस पॉजिटिव इट इज स्टैफिलोकोकस ऑरियस. इफ इट इज कोएगुलेस नेगेटिव then it is either saprophyticus or epidermidis. It can be other things also, but mostly important these are. See, saprophyticus and epidermidis, how you differentiate them? See, you cannot kill a सांप with नोवोबायोसिन. सांप क्या होता है? सांप यानी कि स्नेक. स्नेक को मारना बहुत मुश्किल होता है. सो सांप को आप नहीं मार सकते नोवोबायोसिन से. सो सांप नहीं मरेगा, रेजिस्टेंट. एपिडर्मिडिस इज सेंसिटिव. ओके, सो कैटलेस, स्टैफ, coagulase positive, so it is staph aureus. Coagulase negative, you differentiate with the help of novobiocin. If it is sensitive, it is epidermidis. If it is not sensitive, it is resistant, it is saprophyticus. Streptococcus alpha, beta, gamma. Gamma differentiate enterococcus from non-enterococcus with the help of 6%, 6.5% NaCl. If it is growing, it is enterococci. If it is not growing, it is a non-enterococcus. This cannot tolerate this much of NaCl. Enterococci, we have Fecalis faecium. Non-enterococcus, we have Streptococcus bovis. Complete hemolysis, we differentiate with the help of bacitracin. So B for beta hemolysis, B for bacitracin. Very easy. Alpha looks like O, so O. Alpha looks like O, so O. Alpha hemolysis वालों को ऑप्टोजिन से दिखेंगे, बीटा हेमोलाइसिस वालों को bacitracin से. Pyogenes is sensitive to bacitracin, but agalactic is not. And again optocin में, optocin targets capsule, so pneumonia will be sensitive, streptococcus pneumonia will be sensitive, viridans will be resistant. Okay, then branching अब आते हैं bacilli पे. Bacilli पे we have aerobic and anaerobic. Only 3 bacteria are there which are anaerobic. I'll tell you later, but Clostridium is one of them. So Clostridium is an anaerobic bacteria, and Clostridium is a bacilli which is a gram-positive bacilli with anaerobic growth. And aerobic में we have Listeria, Bacillus and Corynebacterium. ठीक है? So Listeria, Bacillus and Corynebacterium, they are aerobic. And branching filaments में we have again aerobic, anaerobic. Again A, B, C mnemonic है anaerobic bacteria का, जिसमें से A आपको ऑलरेडी पता चल चुका है एक्टोनोमाइसिस, सी आपको पता चल चुका है क्लोस्ट्रीडियम, बी बताऊंगा और भी 2 लोग हैं इसके अलावा. ठीक है, सो एनारोबिक्स में वी हैव क्लोस्ट्रीडियम विच इज अ बैसिलाई, एनारोबिक में वी हैव एक्टोनोमाइसिस
which is a branching filament, and aerobic में we have nocardia. ठीक है, nocardia is weakly acid fast, actinomyces is non acid fast. So bacilli, cocci, branching filaments में we have anaerobic, aerobic. Aerobic is Neisseria, aerobic is nocardia, anaerobic is actinomyces. Actinomyces is non acid fast, nocardia is weakly acid fast, and bacilli में anaerobic we have Clostridium, and aerobic we have Listeria, Bacillus and Corynebacterium. So this is the mnemonic. See cocci में कौन कौन है? We have staph, strep and enterococcus. अलग ग्रुप हो चुका है, ये अलग ग्रुप हो चुका है, staph, strep and enterococcus. bacilli में कौन से ब्लैंक mnemonic. ठीक है, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग जानते हैं बेसिकली कौन कौन है. एक्टोनोमाइसिस है, क्लॉस्ट्रीडियम था ही, दे आर एनारोबिक्स, बट ब्लैंक mnemonic में बी फॉर बैसिलस, एल फॉर लिस्टीरिया, ए फॉर एक्टोनोमाइसिस, एन फॉर नोकार्डिया, सी फॉर कॉर्निबैक्टीरियम, सी फॉर क्लॉस्ट्रीडियम. बट बेटर है आप mnemonic की बिना याद रखो. एक्टोनोमाइसिस, नोकार्डिया, यहाँ पे आपका ये लोग आ गए, स्टैफ, स्ट्रेप एंड एंट्रो को तो हो गया, नोकार्डिया, एक्टोनोमाइसिस हो गया, यहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम, यहाँ पे लिस्टीरिया, बैसिलस, कॉर्निबैक्टीरियम. ब्लैंक में जो बी है वो है आपका बैसिलस, सी है आपका क्लॉस्ट्रीडियम, सी है क्लॉस्ट्रीडियम, सी है कॉर्निबैक्टीरियम, एल फॉर लिस्टीरिया, ए फॉर एक्टोनोमाइसिस, एन फॉर नोकार्डिया. I told you I'll tell you about the anaerobes. So actinomyces, bacteroides, clostridium. हमें ऑलरेडी ए पता है, सी पता है, बी फॉर बैक्टेरोइडिस. एक्टिनोमाइसिस क्या है? फिलामेंट वाला, ब्रांचिंग फिलामेंट वाला बैक्टीरिया जो कि है ग्राम पॉजिटिव. क्लॉस्ट्रीडियम इज अ बैसिलाई विच इज ग्राम पॉजिटिव. बैक्टेरोइडिस इज अ ग्राम नेगेटिव रॉड, बैक्टेरोइडिस. एंड अदर देन दैट वी हैव टू मोर एनारोब्स, पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस, ओके, ग्राम नेगेटिव कॉकाई. तो ये गलत लिखा हुआ है, इट्स अ ग्राम पॉजिटिव कॉकाई. So whenever you get a gram positive cocci and you see it in a chain like structure, don't jump directly to streptococcus. If it is chain like and it is gram positive, then there are two diagnoses, strep or pepto streptococcus. अगर ब्रांच में है तो फिर स्टाफेलो, अगर चेन में है तो फिर स्ट्रेप्टो या फिर पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस. उसके लिए कैसे अलग करेंगे? With the oxygen. If it is growing in the presence of oxygen, it is strep. If it is killed in the presence of oxygen, obviously it is a peptostreptococcus. Other than peptostreptococcus, another bacteria is fusobacterium, which is a gram-negative rod. Fusobacterium, gram-negative rod. Let us study about the capsulated bacteria. Okay. सो ये तो बहुत ही पॉपुलर है कि कौन से आपके कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज हैं. इसका तो निमोनिक है बहुत ही फेमस. सम किलर्स हैव प्रिटी नाइस कैप्सूल. So it is S for Streptococcus pneumoniae, K for Klebsiella pneumoniae, H for Haemophilus influenzae type B, P for Pseudomonas aeruginosa, N for Neisseria meningitidis, and C for Cryptococcus neoformans. It is actually a fungi. About two more bacteria that is not mentioned in this mnemonic. ये तो इसमें तो कैप्स तो एक्चुअली है ही नहीं. तो some killers have pretty nice, ये लोग बैक्टीरिया हैं. Better to call it some killers have pretty nice body. B for Bacillus anthracis. In this, better to write it like this. Some killers are pretty nice body, where P and Y, they're both important. So B for Bacillus anthracis, Y for Yersinia pestis. Some killers have pretty nice body, some killers have pretty nice capsule.
सब किलर्स है प्रिटिनाइज कैप्सूल से ईजी हो जाता है कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, और इसे याद रख लेना। सब किलर्स है प्रिटिनाइज बॉडी, बी फॉर बैसिलस एंथ्रेसिस, वाई फॉर yersinia pestis, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्लेप्शियला निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, स्यूडोमोनास एरोजेनेजा, निजीरिया मेनिंजाइटिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, yersinia pestis एंड आपका लास्ट क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दी स्टाफिलोकोकस का विरुलेंस फैक्टर्स। तो हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लिया, अब स्टाफ में आते हैं एंड देन विल गो टू ग्राम नेगेटिव्स। सॉरी थोड़ा स्टाफ पढ़ाते नहीं हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन में आते हैं ग्राम नेगेटिव्स का, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव क्लासिफिकेशन में आते हैं। ओके सी, ग्राम नेगेटिव्स में कुछ फैमिलीज हैं, जिन फैमिलीज का नमोनिक है ये फैमिलीज इन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। ओके, इसको याद रखने का ईजी तरीका है सीटी ब्रेन विथ पीएनएस, एंड इसका एक और चीज़ होगा एल, सीटी ब्रेन विथ पीएनएसएल। So C for Campylobacter family, Campylobacteriaceae. B for Brucellaceae, Campylobacter Brucellaceae with से V ले लो, Vibrioceae, PNS, Pseudomonaceae, Neisseria, Spirochetaceae and Legionellaceae. CT brain with PNSL, Campylobacteriaceae, Brucellaceae, Vibrioceae, Pseudomonaceae, Neisseria, Spirochetaceae and Legionellaceae. Campylobacter, Brucella, Vibrio, Pseudomonas, Neisseria and Spirochete and also Legionella. Other than these 1 2 3 4 5 6 7, the most important group जो है वो है आपका Enterobacteriaceae. इन दिस एंटेरोबैक्टीरियाceae वी हैव 7 बैक्टीरियाज, उसका एक नमोनिक है। तो एक तो हो गया सिटी ब्रेन विद पीएनएसएल, ये 7 ग्रुप्स हो गए। इसके अलावा एक और 8th ग्रुप है एंटेरोबैक्टीरियाceae, जिसमें फिर आपके 7 बैक्टीरियाज हैं, जिसका नमोनिक है स्काइप, SSPP, SKYPE, SSPP, S फॉर साल्मोनेला, S फॉर शिगेल्ला, K फॉर क्लेप्शियला, Y फॉर yersinia, P फॉर प्रोटियस, P for Providentia, E for E. coli. So Salmonella, Shigella, E. coli, Proteus, Providentia, Yersinia, Klebsiella. तो साल्मोनेला में कौन कौन है? साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी एंड नॉन टाइफोइडल. दे ऑल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग, बट दीज टू कॉज टाइफॉइड. पैराटाइफी एंड टाइफी दे कॉज टाइफॉइड, दिस वन कॉजेज फूड पॉइजनिंग. शिगेला में 4 हैं, शिगेला डिसेंट्रिए, फ्लेक्सनेरी, बॉयडी, सोनोए. डिसेंट्रिए, फ्लेक्सनेरी, बॉयडी, सोनई, शिगेला हो गया. Yersinia में we have 2, Yersinia pestis, Yersinia enterocolitica. Shigella, dysentery, flexneri, boidy, sonei. Salmonella typhi, paratyphi, non-typhoidal salmonella. Yersinia pestis, enterocolitica, Skype, pneumonic. Salmonella, Shigella, Klebsiella, Yersinia, Proteus, Providentia and E. coli. Then जो हमारा निमोनिक्स में हमने देखा था कि सिटी ब्रेन विथ PNSL, जहाँ पे V है विब्रियोनाशिए, विब्रियोनाशिए में वी हैव विब्रियो कॉलेरी, पैराहिमोलाइटिकस एंड वल्निफिकस. विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस, विब्रियो वल्निफिकस. स्यूडोमोनासिए फैमिली वी हैव स्यूडोमोनास एरेजिनोसा एंड बर्कहोल्डेरिया सेपासिया. ठीक है. सिटी ब्रेन विथ PNSL में N है, निजीरिया, विच इज़ द ओनली ग्रानुलोनिक कॉकाइस. निजीरिया गोनोरिया, निजीरिया मेनिंजाइटिस. ओके. फिर आपका आता है सिटी ब्रेन PNSL में S आता है, स्पाइरोचीट्स, ट्रोपोनिमा, लेप्टोस्पाइरा एंड बोरेलिया. ट्रोपोनिमा पैलिडम, लेप्टोस्पाइरा एंड बोरेलिया. देन सिटी ब्रेन विथ PNSL में हमने कैम्पेलोबैक्टर देख लिया. ब्रुसेला हो गया, विब्रियो है, सीडोमोनास हो गया, निजीरिया हो गया, स्पाइरोचीट हो गया, लीजियोनेला हो गया. ठीक है. लीजियोनेला में लीजियोनेला न्यूमोफाइलम. एक चीज़ बच जाता है जो नहीं है, वो है H, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H. तो सिटी ब्रेन विथ एंटेरोबैक्टीरियाceae हो गया ग्रुप. सिटी ब्रेन विथ PNSL हो गया. सिटी ब्रेन विथ PNSL में कैम्पेलोबैक्टर साथ साथ हेलिकोबैक्टर भी लिख लेना. कैम्पेलोबैक्टर एंड हेलिकोबैक्टर दोनों एक ही तरह से दिखते हैं. कैम्पेलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, देर बोथ कर्व्ड रॉड्स. सो व्हाट आर द कर्व्ड रॉड्स? हेलिकोबैक्टर, कैम्पेलोबैक्टर, देर कर्व्ड रॉड, एंड विब्रियो इज कर्व्ड रॉड.
सो 3 बैक्टीरिया कर्व्ड रॉड, सिटी ब्रेन विथ PNSL में 2 लोग हैं ऑलरेडी, कैम्पेलोबैक्टर इज कर्व्ड रॉड, फिब्रियो इज कर्व्ड रॉड एंड सिटी ब्रेन में कैम्पेलोबैक्टर के साथ साथ आप H पाइलोरी को भी याद रखना है, हेलिकोबैक्टर, तो आपके ग्राम नेगेटिव पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे. Why are you trying to memorize the gram negatives? Because with this we'll move to the culture medium. So इंटरबैक्टीरिया हम लोग फर्स्ट कवर करेंगे, देन विल मूव टू दी सीटी ब्रेन विथ PNSL करके इस ऑर्डर में याद रखेंगे. तो सबसे पहले स्काइप से स्टार्ट करते हैं. इंटरबैक्टीरिया में S फॉर साल्मोनेला, S फॉर सीजेला. लेट्स स्टार्ट विथ साल्मोनेला. सो देयर आर 5 मीडियाज फॉर साल्मोनेला. साल्मोनेला का है SS अगर, देयर इज साल्मोनेला शिगेला अगर, XLD that is xylose lysine deoxycholate agar, XLD agar, hectone enteric agar, bismuth sulfide agar, highly selective, and selenite F broth. So these are the 5 important most medias for the salmonella: SS, XLD, hectone enteric, bismuth sulfide, selenite broth. इसको याद रखने, एक निमोनिक भी है. This is the mnemonic. Salmonella exhibit highly black sheen. Salmonella, there is SS for SS agar, X for XLD, H for hectone enteric, B for bismuth sulfide, S for selenite F broth. Salmonella exhibit highly black sheen. Salmonella exhibit highly black sheen. Salmonella exhibit highly black sheen. SS, XLD, hectone enteric, bismuth sulfide, selenite F broth. These 3 are not just only selective but also differentiate between Salmonella and Shigella. Bismuth sulfide is highly selective. It does not allow the growth of Shigella and selenite F broth. See why I am calling it selective and differential as well, because in these medium this Salmonella appears black. The first 3 medias are also used for Shigella. SS agar, XLD, HE. Remember the mnemonic. Salmonella exhibit highly black sheen. जो ब्लैक कॉलोनीज हैं वो इन तीनों में मिलती हैं. दैट इज योर SS, XLD एंड हेक्टोन एंट्रिक. बिस्मथ सल्फाइड अगर में यू गेट अ sheen, you get a black sheen. This is bismuth sulfide, you get a black sheen. So first 3 are used for Shigella: SS agar, XLD and HE. Then comes your K, Klebsiella. Klebsiella में सबसे पहले आप याद रख लो, मैकॉन की अगर का पर्पस ये है कि जो लैक्टोज फर्मेंटर्स है दे विल अपेयर पिंक. So Klebsiella is a lactose fermenter, it will appear pink. Okay, there are other lactose fermenters also. Other one is your E. coli, which is also a lactose fermenter. So they will both give yellow color colonies in the clade medium. I'll tell you the list of the medias for Klebsiella. So SS हो चुका है हमारा. अभी हम K पे हैं Klebsiella में. मैकॉन की EMB clade. मैकॉन की EMB clade. EMB stands for eucin methylene blue agar. Okay, so we have 3 agar medias for Klebsiella. First of all, मैकॉन की, that will give pink colonies. See the lactose fermenters के बारे में यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है. If it is a lactose fermenter in a मैकॉन की अगर, it will appear pink. If it is a non-lactose fermenter, it will not appear pink. It will appear the original color of the medium, that is yellow color. Okay, so what are the medium for Klebsiella? मैकॉन की अगर, then your EMB agar, eucin methylene blue, and clade agar. Clade stands for cysteine lactose electrolyte deficient agar. Cysteine lactose electrolyte deficient agar. Okay, so this clade medium, about this clade medium which is used in the Klebsiella along with EMB agar. About this clade medium we should know that clade media में बहुत सारे organisms grow करते हैं, जिसमें से Klebsiella and E. coli, they both give yellow colonies. But the yellow colony of Klebsiella obviously yellow क्यों है, क्योंकि यहाँ पे clade medium में आपका lactose है. So lactose fermenter है हमारा Klebsiella as well as E. coli, and Klebsiella is a very strong lactose fermenter, so it will give very large colonies, but E. coli के colonies थोड़े से छोटे होंगे. So Klebsiella and E. coli both मैकॉन की अगर का कॉन्सेप्ट आएगा, बोथ दोनों में क्लेड का भी आएगा, दोनों में येलो दिखेंगे. एंड प्रोटियस, सीडोमोनास, एंट्रोकॉकस ये लोग भी ग्रो करते हैं इसमें. सो क्लेड में Klebsiella, E. coli, प्रोटियस, सीडोमोनास, एंट्रोकॉकस ग्रो करते हैं.
बट रिमेंबर क्लेप्शियला के लिए कौन से अगर मीडियाज हैं, कौन की EMB क्लेड। उसके पहले हमने पढ़ा था साल्मोनेला शिगेला, जिसके लिए हमने निमोनिक बनाया साल्मोनेला एग्जिबिट हाईली ब्लैक शीन, दैट इज SS अगर XLD HE BSA एंड आपका S फॉर सेलेनाइड F ब्रॉथ। फिर शिगेला में हम देखा फर्स्ट 3 जो मीडियम है वो 3 मीडियम में आपके शिगेला के, दैट इज SS अगर XLD एंड HE। देन क्लेप्शिला EMB एंड क्लेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैकॉन की EMB क्लेड। Then we'll study Yersinia. Why? For Yersinia there are 2 medium. One is YSA, that is Yersinia selective agar, very easy, YSA, and CIN most important one. CIN में Yersinia enterocolitica, दो तरह के Yersinia होते हैं, Yersinia pestis and Yersinia enterocolitica. Yersinia enterocolitica will give bull's eye colony in the CIN agar media, bull's eye colony in the CIN agar media by Yersinia enterocolitica. CN का फुल फॉर्म है सेफ्सुलोडिन इर्गासान नोवोबायसिन अगर, N फॉर नोवोबायसिन, I फॉर इर्गासान, C फॉर सेफ्सुलोडिन इर्गासान नोवोबायसिन अगर, यर्सिना इंटरकोलाइटिका गिव्स बुल्स आई कॉलोनी एंड वाई से अगर मीडियम। फिर स्काइप में फिर P आ जाएगा प्रोटेस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि क्लेड मीडियम किसके किसके लिए है, क्लेप्शियला, एक है आपका क्लेप्शियला, एक है आपका इकोलाई, दोनों ही येलो येलो देते हैं बट इसका येलो बड़ा है और इसका येलो छोटा है, ठीक है। एंड प्रोटियस, फिर स्यूडोमोनास भी इसमें आता है बट दे आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट द मीडियम इनटू येलो कलर। सो प्रोटियस, ओके, प्रोटियस के लिए कौन से मीडियम है, वी हैव क्लेड XLD PEA दैट इज फिनाइल इथाइल अगर, BSA बिस्मथ सल्फाइड एंड न्यूट्रिएंट अगर विथ PVP। पर्पस ऑफ PVP इज टू प्रिवेंट द स्वार्मिंग ग्रोथ ऑफ द प्रोटियस। थोड़ा सा आपको इसका मोटिलिटी इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, किस किस तरह की मोटिलिटी होती है बैक्टीरियाज में। मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियाज क्लासिफिकेशन है, वी हैव फ्लैचुलर मोटिलिटी विच कैन बी ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैचुला, आइदर इट कैन बी सिंगल पोलर फ्लैचुला, एंड में एक तरफ फ्लैचुला, और इट कैन बी पेरीट्रिकस, चारों तरफ से घरे रहेंगे, मल्टीपल ऑल ओवर द बॉडी, पेरीट्रिकस flagellum, okay, and peritricus flagella which are present only at the poles, okay, peritricus which is only present at the poles. Flagella के अलावा we have corkscrew motility for which we have spirochetes. Spirochetes में corkscrew motility होता है, twisting and flexing motion. What are the spirochetes? We have 3 spirochetes. Leptospira, Borrelia and Treponema. These are the spirochetes. Leptospira, Borrelia and Treponema. Disease is caused by Leptospira, leptospirosis. What is the name of the species of Borrelia which is responsible for diseases? Borrelia burgdorferi, which causes Lyme disease. Borrelia burgdorferi causes Lyme disease, and Treponema pallidum causes syphilis. So the three spirochetes, Leptospira, Borrelia and Treponema. We all know Treponema causes syphilis, Borrelia burgdorferi causes Lyme and Leptospira causes leptospirosis. ये हो गया कॉक्सक्रू। फ्लैजिला हम और थोड़ा डिटेल में बताएंगे आपको। ग्लाइडिंग मोटिलिटी, दैट इज द बैक्टीरिया इज slowly moving over the surface without the help of any flagella. What is the mechanism? We don't know about them. But lastly, remember twitching motility. For this they use pili. So this is flagella, this is pili, this is endoflagella. Corkscrew movement happened due to, so flagella, endoflagella, corkscrew, and with the help of pili the movement is known as twitching. Okay, and two bacteria causes twitching movement, Pseudomonas aeruginosa and Neisseria gonorrhea. Now let me tell you about the flagella types. What are the flagellas? Monotrichous, single flagella at one pole. Example is Vibrio cholerae.
single flagella at one pole. Lophotrichus, you have tuft of flagella at one pole or either both poles. Tuft of flagella at one pole or both pole. You have example Pseudomonas. नेक्स्ट एम्फीट्रिकस, एक्चुअली इसको पहले करना चाहिए था मोनोट्रिकस के बाद. मोनोट्रिकस में देयर इज वन फ्लैजिला एट वन एंड. इन एम्फीट्रिकस यू हैव वन फ्लैजिला एट बोथ एंड्स. एग्जाम्पल स्पाइरिलियम. सो मोनोट्रिकस एम्फीट्रिकस. एम्फीट्रिकस से ज़्यादा हो जाता है लोफोट्रिकस, यहाँ पे दोनों तरफ में बंच ऑफ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है. एग्जाम्पल स्यूडोमोनास. सिंगल फ्लैजिला से मूवमेंट विब्रियो कॉलरी, दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला. Amphitrachus, Spirilium, and Lophotrachus, tuft of flagella at both ends or one end, Pseudomonas. Then Peritrachus. Peritrachus means flagella split all around. This is E. coli and Salmonella. E. coli, Salmonella, Proteus is also Peritrachus. So E. coli, Salmonella, Proteus, they are Peritrachus. Other than Pseudomonas, H. pylori is also Lophotrachus. Monotrichus, Vibrio cholerae. Amphitrachus, एक एक फ्लैजिला दोनों तरफ, Spirilium. Lophotrachus, two example, Pseudomonas and H. pylori. Remember this, Pseudomonas and H. pylori. And Peritrachus, yeah, E. coli, Salmo, Proteus.